Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I will discuss 2024 and 2023 board questions of the chapter Arithmetic Progression for class 10 ICSE. So already मैंने ये question solve कर लिया है. So I'll explain these questions so that आप लोगों को clear हो जाएगा कि steps कैसे लिखना है. For MCQs you can answer them directly if you are confident. Otherwise I'll suggest अगर confidence नहीं है तो side में जो question जहाँ पे कर रहे हो उधर ही side में उसका rough work show करना है and then answer the question. Okay, so MCQ के लिए भी if you do the rough work it would be better. Okay, now these are the important formulas. तो सारे आप लोगों को अब तक याद हो गया रहेगा. There is one formula for nth term which is also called general term, so which is denoted by Tn, which is a plus n minus 1d. d common difference होता है, a is the first term and n number of terms. Okay, next sum find करने का formula Sn, that is sum of like say 25 terms. Okay, so n will be 25. ठीक है, so Sn का formula होता है n by 2 into 2a plus n minus 1d. Suppose you know the last term, then Sn is n by 2 into a plus l. l is also same as Tn. Tn और L same होता है. So अगर Tn पता है, that is same as L. So if you know the last term, you can use this formula for finding the sum, n by 2 into a plus L. ठीक है. Then question आता है, find the 8th term from the end. Find the 11th term from the end of the given AP. So nth term from the end अगर फाइंड करना है उसके लिए यू हैव टू यूज द फॉर्मूला L माइनस n माइनस 1d, वेर L इज द लास्ट टर्म, n हो गया नंबर ऑफ टर्म. सपोज 11th टर्म है तो n विल बी 11 इंटू डी. सो इतना ही फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखना है. And write all the steps as I keep telling in all my videos. Steps are important, and जिस question में whatever formulas you are using, mention the formula. Now let's see the question. Now 2024 का question है, 7th term of this AP. Okay, so AP क्या है, 1 by a plus 1 second term हो गया and 1 by a plus 2 third term हो गया. So we have to find the 7th term. So a हो गया, first term a है तो a is 1 by a. Common difference क्या है, 1 by a plus 1 minus 1 by a, तो common difference तो 1 हो गया. 7th term निकालना है T7 which is a plus 60. So a क्या है, 1 by a plus 6 into 1 6. So 1 by a plus 6 is the correct option. So और ये तो बिना कैलकुलेशन के भी हो जाएगा. ये फर्स्ट टर्म है. सेकेंड टर्म के लिए क्या है, 1 by a plus 1. थर्ड टर्म के लिए 1 by a plus 2. थर्ड टर्म दैट मीन्स T3 आ रहा है, सो इट इज़ 1 by a plus 2. सो ऑब्वियसली T7 विल बी, सब में 1 by a आ रहा है ना, सो 1 by a प्लस 7 से 1 कम 6. सो ये पैटर्न देके सिक्स्थ टर्म विदाउट कैलकुलेशन ऑल्सो यू कैन डू, बट इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंस एज आई मैंशन इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो, डू द कैलकुलेशन. ठीक है. Now next question, this is also 2024 3 marker. Nth term of an AP is given by the relation Tn equal to 6 into 7 minus n. We have to find its first term and common difference, and we have to find the sum of first 25 terms. Okay, so what is given, nth term is given Tn equal to 6 into 7 minus n. First term निकालना है, common difference निकाल. So Tn is 6 into 7 minus n. First term is T1, substitute n equal to 1 in this formula, so 6 into 7 minus 1, 6 into 6 36 हो गया फर्स्ट टर्म. कॉमन डिफरेंस के लिए फर्स्ट फाइंड द सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म इज 6 into 7 minus 2, 6 into 5 30, so सेकेंड टर्म हो गया. कॉमन डिफरेंस इज T2 minus T1, so 30 minus 36 minus 6 is the common difference. Okay, so first question was first term निकालना था and common difference. So first term is 36, common difference is minus 6. Always put the final answer in the box. Okay, now second question पूछा है, sum of its first 25 terms. That means we have to find S25. तो Sn का फॉर्मूला क्या है, n by 2 into 2a plus n minus 1d. So S25 will be 25 by 2 into 2a. a क्या है 36, तो 2 into 36 हो गया 72 plus 25 minus 1 that is 24 into d हो गया minus 6. So 25 by 2 into 72, this is minus 144. साइन का ध्यान रखना है, बी केयरफुल अबाउट द साइन एंड डू योर कैलकुलेशंस केयरफुली. सो 25 by 2 इंटू ये हो गया minus 72, सो 25 इंटू minus
36 हो गया माइनस 900. ओके, सो सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स हो गया माइनस 900. 2023 question, nth term of an AP is 2n plus 5. You have to find the 10th term. So this is one marker. Now nth term is 2n plus 5. बहुत easy question है. 10th term, so इसमें n के जगह 10 substitute करेंगे. So 2 into 10 20 plus 5 25. Correct option हो गया option C. ठीक है. Now next question, 5th term and 9th term of an AP are 4 and minus 12 respectively. We have to find the first term, the common difference and the sum of 16 terms of the AP. 3 marks का question है. ठीक है. नाउ ऐसे क्वेश्चंस में 5th टर्म एंड 9th टर्म जैसे 2 टर्म्स दिया है, सो यू विल हैव टू फ्रेम 2 इक्वेशंस एंड 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने से ए एंड डी का वैल्यू मिल जाएगा. एंड वंस यू हैव द वैल्यूज फॉर ए एंड डी, बाकी का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है. ठीक है. सो यहाँ पे अभी इसमें फर्स्ट टर्म नहीं पता है, डी नहीं पता है. हाउ विल यू स्टार्ट द क्वेश्चन? ऑलवेज राइट लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस. ठीक है. स्ट्रेट ऐसे ही क्वेश्चन देके डोंट स्टार्ट सॉल्विंग इट. फर्स्ट राइट द गिवन डिटेल्स प्रॉपरली. सो यू विल स्टार्ट, यहाँ पे ए और डी नहीं मालूम है, सो ऑलवेज राइट लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस. ओके. नाउ 5th टर्म is denoted by T5. T5 is given 4 and 9th term is T9 and that is given minus 12. T5 क्या होता है? A plus 4D. Tn is A plus n minus 1D. ओके. सो चाहिए तो स्टार्टिंग में इधर ही एक बार फॉर्मूला लिख सकते हैं, बार बार ये दोनों जगह में फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो Tn इक्वल टू A plus n minus 1D. Okay, so T5 will be A plus 4D which is 4. T9 is A plus 8D which is minus 12. Now 2 equations हो गया. We will subtract these 2 equations. So subtraction में don't forget to change the sign. So A gets cancelled. 4D minus 8D minus 4D equal to 4 plus 12 16. So D equal to 16 by minus 4. 16 by minus 4. So we have minus 4. Okay. So D मिल गया. Substitute the value of D in equation 1. So we have A 4 into minus 4 minus 16 equal to 4. So A is 20. ठीक है. So first question का आंसर मिल गया. First term. Okay. So first term is 20. Second question was we had to find the common difference. So question B, common difference equal to minus 4. So ऐसे you have to number the sub questions properly and जो भी answers मिला है उसको अच्छे से इसको ऐसे box में डालना है. Okay. Now third question was to find the sum of 16 terms of the AP. So S16. So Sn का formula लिखना है. So formula is very important. Write the formula. Okay. So S16 is 16 by 2 into 2A. A का value क्या था? 20 and common difference was minus 4. So 2 into 20 plus n हो गया 16 minus 1 15 into D is minus 4. So 8 हो गया. 8 into this is 40 minus 60. 40 minus 60 is minus 20. 8 into minus 20 minus 160. So sum of 16 terms is minus 160. ठीक है. Now ये भी 2023 का ही question है. 3 marker. Which term of the AP 15, 30, 45, 60 and so on is 300. Okay. And also find the sum of all the terms of the AP. Now सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है which term of the AP. Now already it is mentioned कि ये AP है. So how will you start? Given AP is first step whatever is given. So write the given AP. Given AP is 15, 30, 45, 60 and so on. कभी कभी they will say list of numbers or sequence of numbers. अगर AP mentioned नहीं है question में, then you also have to show that given numbers form an AP. So you have to find like T2 minus T1, T3 minus T2 and so on. Then you will say since the difference between consecutive terms is constant, given list of numbers form an AP. ठीक है. Now यहाँ पे already AP mention किया है. So just write given AP लिखना है. Once you write AP, second step is A लिखो. A is 15, D is 30 minus 15, 15. यहाँ पे D show करना है. 30 minus 15, 15. Okay. Now question क्या है? Which term is 300? So assume that nth term is 300. So let nth term equal to 300. Nth term means
Tn is 300. Now Tn का फॉर्मूला a plus n minus 1d equal to 300. बस यहाँ तक हो गया. फिर आगे क्या है? कुछ भी नहीं, just substitute. So a हो गया 15, n minus 1 into d is 15 equal to 300. Okay, so यहाँ से n minus 1 into 15 equal to 300 minus 15, so which is 285. So n minus 1 is 285 by 15, which is 19. So n यहाँ से मिल जाएगा 19 plus 1, 20. So n, there are 20 terms in the, there are what is the question, which term of the AP is 300? So you have to write the answer. Therefore 20th term of the given AP is 300. Okay, second part of the question, find the sum of all the terms of the AP. Means you have to find the sum of all the terms. Number of terms कितना था? 20. So we have to find the sum of all the 20 terms. So we have to find S20. Okay, so Sn का formula हो गया n by 2 into 2a plus n minus 1d. So S20 is 20 by 2 into a का value डालना है, d का value डालना है. Okay, a was 15 and d was also 15. So 2 into 15 30 plus 20 minus 1 ये हो जाएगा 19 into 15. So पूरा calculation करके we will get 3150. So sum of 20 terms equal to 3150. ठीक है, आई होप दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गया रहेगा. कुछ भी अगर नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है, do let me know in the comment section. That's all in this video. Thanks for watching.